Yeah. See. Being recorded. Okay. So now, if you just remember, these are the things we have done in the last class. We have discussed what is my gracilaria, gelidium, porphyra, polysifonia, are the example of red algae. So in the last class we have done with red algae हमने कर लिया था, उसके साथ साथ we have also done with the जो green algae. ये दो algae हम यहाँ पे हमारे cover कर चुके हैं. अब आज हम start करेंगे हमारे यहाँ पे Phaeophyceae है. Phaeophyceae is nothing but a brown algae. तो यहाँ से हमारी story देखना चालू करते हैं. So let's try to see what happens, what do you get to see in the brown algae. So इसको हम यहाँ पे देखते समझते हैं. So when you discuss about the brown algae, now brown algae is something. First of all, you have to know you have around 2,000 species throughout the world. So 2,000 species of brown algae पूरे world के अंदर, and they are mostly marine. They are mostly marine. यहाँ पे आपको exceptional मिलना बहुत मुश्किल होता है. इस सारे यहाँ पे होते हैं marine आपके, right? Now when you observe the brown algae, ना when you happen to come across the brown algae, अगर आपको इस सामने कोई brown algae आता है, तो आपको पता है वहां पे क्या दिखेगा? It is a very elongated structure. A brown algae generally will have a leaf-like structure like this. Will have a long stalk, and will have something at the base. So the leaf-like part on the brown algae is called as my frond. This will be called as my stipe, and this is called as my holdfast. This is what you find in the brown algae. You'll have a frond, stipe, and holdfast. ये आपको तीन regions आपको मिल जाते हैं brown algae के अंदर. So that is what you find in them. So generally ये जो तीन terms है ये आपको दूसरे algae में हमने mention नहीं किए थे, because this is something I will find in the brown algae all the time. All of them are going to be filamentous. सारे के सारे algae जो मेरे यहाँ पे होते हैं, they are going to be filamentous. So all algae are going to be filamentous in nature. Now, as I've told you, brown algae are seen in the oceans and they are mostly marine all the time. You have to know that brown algae will also have some pigments. So they are also going to have some specific pigments. So pigments आपके यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? So pigments I can have something like my chlorophyll A, chlorophyll C, fucoxanthin, and xanthophyll. These are the pigments. So xanthophyll, fucoxanthin, chlorophyll A, chlorophyll C are some of the pigments I will be finding in my brown algae. Basically इन pigments के वजह से, आपका यहाँ पे brown या olive green color आता है, right? So chlorophyll A, C, fucoxanthin, xanthophyll in pigments के वजह से I will be finding that you will have olive green or brown color will be seen over there. So because of them only you will find, इनके वजह से आपको color आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. Because of them only you can find certain kind of coloration will be seen. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know. 2,000 species, mostly marine, filamentous, and pigments are going to be having chlorophyll A, C, fucoxanthin, xanthophyll are the pigments I will find in them. Now they are also known to have some kind of stored food. They will also going to have some kind of stored food. So stored food आपके यहाँ पे क्या होगा? तो stored food जो आपको यहाँ पे मिलता है, that is going to be your laminarin and mannitol. तो laminarin and mannitol are two different type of my carbohydrates जो आपको मिलते हैं यहाँ पे as a stored food. तो याद रखना है, laminarin and mannitol are the two different kind of carbohydrates which I'll get to see in my particular brown algae. ठीक है, तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. बेसिकली ये आपके मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यही है यहाँ पे, that these are the pigments and these are the stored food I will finding in them. इसके बाद आप याद रखना कि जब आप बात करो Phaeophyceae के बारे में, that's a brown algae, यहाँ पे आपको मिलता है उनका कलर जो भी, you will have color will go from your olive green to brown. So olive green से लेके brown जितना आपका यहाँ पे कलर आपका हो सकता है, olive green to brown, this is the kind of coloration you can have in them. Now this group is known to have the algae which can grow up to 100 meter. तो इस ग्रुप के अंदर आपको ऐसा भी algae मिलता है जो आपका 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, and that is called as my kelps.
So kelps is an algae which can grow for 100 meters. ये आपका grow कर सकता है. It can grow for 100 meters. So basically अगर आप ओशन में जाते हो ना, then you get to see कि kelps अगर grow करा होगा तो वो एक अलग ही फॉरेस्ट ही बना के रखता है वो. मतलब kelps का एक अलग इकोसिस्टम आपको दिख जाता है. And this kelps which are nothing but brown algae, they are the habitat जहाँ पे कई सारे आपको फिशेस मिलती है, क्रैब्स मिलते हैं, दूसरे मराइन इनवर्टिब्रेट्स आपको मिल जाते हैं. So again it is a ecosystem where you get to see number of other species are seen. अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये kelps का नाम क्या है, कौन सी स्पीशीज आप कैसे ग्रो करती है, then macrocystis. So macrocystis is the name of the species which grows rapidly like this and going to form this 100 meter का पूरा एक फॉरेस्ट बना के आपको दे सकते हैं. It can grow that extended. तो ये बात आपको रखनी है इसके अंदर याद. Now your Phaeophyceae will have number of examples, so we'll slowly see the examples over there. Like examples आपके यहाँ पे आ सकते हैं like your laminaria, you have your laminaria, we'll have something like your fucus, sargassum. All right, sargassum is also going to be one of the example. Dictyota, right? So these are some of the examples, and you will have another example. Yes, ectocarpus. Ectocarpus. अब ये एग्जांपल आपके सामने कभी आ जाए तो आपको आंखें बंद करके बोलना है दैट्स माय ब्राउन एल्गे. सो लेमनेरिया, फ्यूकस, सरगासम, डिक्ट्यूटा एंड रेक्टोकार्पस आर द एग्जांपल ऑफ माय ब्राउन एल्गे. एंड मैक्रोसाइटिस भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो. दीस आर द एग्जांपल ऑफ माय ब्राउन एल्गे. चलिए देखते क्या लिखा हुआ यहाँ पे. मोस्टली मराइन, दे आर फिलामेंटस एंड ब्रांच, क्लोरोफिल ए, सी, फुकोजेंथिन, जेंथोफिल एंड कलर आपके यहाँ पे हो जाता है आपको ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक. दीज आर द पिगमेंट्स आई विल गेट टू सी. आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके मैक्रोसाइटिस लाइक केल्प्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो. कैन हैव नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ द ब्राउन एल्गे, बट आपको वही एग्जांपल याद रखते हैं जो आपके एनसाइटिक है. तो सिर्फ एनसाइटिक एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखना. दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू. अगर आप उतना याद रख लेते हो आपका काम बन जाएगा अच्छे से. नाउ यू कैन सी दिस फ्रॉन्ट्स, टाइप एंड होल्ड फास्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यू कैन हैव द 3 पार्ट्स. फ्रॉन्ट्स, टाइप एंड होल्ड फास्ट इज समथिंग यू कैन वेरी क्लियरली सी इन देम. पिक्चर्स याद करके जाना. नीट के अंदर कई बार वो इनसाइड का पिक्चर उठा के रखेंगे और बोलेंगे ये बताओ कौन है. उन्होंने कभी भी ये सारे पिक्चर्स तो रखने हैं नहीं. So they are going to ask you the questions from this kind of picture. So they will put the pictures from this particular part of the NCERT. रखेंगे वो लोग slide on the paper, and then they will ask you what has to be done over there. Right? Phaeophyceae में आपको याद रखना है that food is stored as a complex carbohydrate like laminarin and mannitol. Food को हम यहाँ पे store करते हैं in the form of my complex carbohydrate laminarin and mannitol. The wall covered by gelatinous coating of my algin. मैंने आपको पहले बताया था कि ब्राउन एल्गे के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द एल्जिन विच इज माय हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस. केराटिनिन एंड एल्जिन हमने यहाँ पे बात करता है, एंड एल्जिन वाज अ पार्ट ऑफ माय ब्राउन एल्गे. प्लांट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. सो होल्ड फास्ट की वजह से वो अपने आप को पकड़ के रखता है सबस्ट्रेट के साथ. हैज अ स्टॉक, स्टाइप एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड एज माय फ्रॉन्ट. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द ब्राउन एल्गे. ठीक है. इसमें आप एक और चीज याद रखना. इनके जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, the asexual spores they are going to be forming over here now, they will be having lateral your flagella. तो यहाँ पे आपके जो asexual spores यहाँ पे होते हैं they will have lateral flagella. lateral मतलब एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे. ठीक है. so asexual spores will have lateral flagella और वो unequal length का है, and that too of the unequal length. देख लो ना आप, एक बड़ा एक छोटा है यहाँ पे. so you have a flagella, so you have a unequal flagella and of your on the lateral side. The lateral side you will get to see them. So this is what you find in them. So this is something you have to know in terms of my asexual spores. These are your asexual spores. So reproduction by fragmentation आपके यहाँ पे हो जाएगा.
As I've told you, asexual reproduction में क्या होगा? Bisphere shaped biflagellated zoospores have unequal laterally attached flagella. Unequally laterally attached flagella आपको यहाँ पे मिल जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा? ये दैट वुड बी आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ओगैमस. ये तीनों कंडीशन आपको मिलता है आपके सेक्सुअल के अंदर. तो सेक्सुअल के अंदर तो आपको सब कुछ मिल रहा है. सिमिलर टू योर ग्रीन एल्गे. ग्रीन एल्गे में भी आपको सब कुछ मिल जाता. आइसोगैमस, एनिसोगैमस, ओगैमस तीनों आपको मिल जाता. आपका जो रोडोफाइसिए था आपका, दैट वाज द ओनली वन व्हिच वाज शोइंग द ओगैमस कंडीशन. बाकी सबके अंदर आपको ये तीनों चीजें आपको मिल जाती है सेक्सुअल पार्ट के अंदर. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. एंड यू कैन सी द टेबल ओवर. ये आपका टेबल एनसाइड का ही आपका टेबल है. सो ये आपको इसे एक बार आप जाके देख सकते हो. एंड यू कैन रिमेंबर व्हाट इज बीन गिवन ओवर हियर. नाउ these are the questions we have already solved. इसका आंसर बता दो. Which pigments are found in Phaeophyceae? You can answer this quickly. कौन से पिगमेंट मिलेंगे यहाँ पे Phaeophyceae के अंदर? क्लास 11th, गुड मॉर्निंग. बताइए इसका आंसर. It is going to be your option A, right? Chlorophyceae A, chlorophyll A, CN, fucoxanthin are the correct answer. और कुछ नहीं है, यही है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय ब्रायोफाइट्स. तो हमने वहां पे वो सब चीजें हमने आगे देख ली. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला ग्रुप, दैट्स माय ब्रायोफाइट्स. नाउ लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट. देयर आर सम चेंजेस आई हैव टू मेक इन दिस. सॉरी क्लास, जस्ट गिव मी. समवन हैज अ कंसर्न आई गेस. संगरूर बताइए बेटा आपका क्या कंसर्न यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही. आई थिंक बेटा आपका ये कंसर्न हम पहले भी देख चुके हैं. आई एम क्वाइट श्योर इट हैज टू डू विद द नेटवर्क एंड फ्रॉम योर साइड. So please, yeah, that is something we'll have to just have a look at that. Yeah. Because I think along with other than Sangroon, all other people were able to see the screen. फिलहाल के लिए अभी तो screen दिख नहीं रही. अभी तो like I have removed the screen share, but I think other people are able to see the screen now. Just wait a minute. I'll just try again to reshare and then let's check. हाँ जी, बता दो. अगर किसी को यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही तो पहले बता दो आप लोग. अगर आपके स्क्रीन पे ऊपर कलरफुल प्लांट्स तो नहीं है, ग्रीन वाले प्लांट्स ही है. अगर आपको दिख रहे दैट मींस आपको स्क्रीन दिख रही है. So I hope the screen is visible to all of you. All right. So now let's start with your ब्रायोफाइट्स. तो जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं ना, देयर लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सम फ्यू वेरी सिंपल थिंग्स. दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ये बात आप लोग जानते हो कि ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. लेट्स अंडरस्टैंड सम अदर थिंग्स ओवर हियर. So when I discuss something in terms of the bryophytes, you should know that the main plant body is going to be your gametophytic. Your main plant body is gametophytic. तो जब मैं कह रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गामेटोफाइटिक आपके यहाँ होती है, दैट मींस व्हाट कि आपका इट इज गोइंग टू बी लाइक हैप्लॉइड बॉडी, राइट. सो इट इज गोइंग टू बी हैविंग द हैप्लॉइड बॉडी. तो बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ब्रायोफाइट को, सो दे विल हैव हैप्लॉइड बॉडी. ठीक है. दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. इनके पास आपको रूट, स्टेम और लीव्स आपको नहीं मिलते. सो नो रूट्स स्टेम एंड लीव्स. तो कोई रूट्स स्टेम लीव्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे. यहाँ पे रूट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, बट रूट्स की जगह यू विल हैव समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स इज माय राइजोइड्स. रूट्स तो आपके पास यहाँ पे है नहीं, बट उसकी जगह यू विल हैव समथिंग एल्स एंड दैट इज कॉल्ड माय राइजोइड्स. और राइजोइड्स की मदद से दे कैन होल्ड ऑन टू द सबस्ट्रेट. तो अगर मेरा ग्राफाइट कहीं पे बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर, देन वो राइजोइड्स की मदद से वहां पे वो उसे पकड़ के बैठा हुआ है. सो बिकॉज ऑफ द राइजोइड इट इज बीन होल्डिंग ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्टोन. अब राइजोइड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे कैन बी इधर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. तो
ठीक है, so that's one thing you have to know. So again, the body is like not in a true sense will have any kind of leaf, stem or leaves. It is a thalloid body, and the rhizoids can be seen over there. Now you should know that they will have no vascular tissue as well. So the vascular tissue भी आपको नहीं मिलता. So there's going to be no vascular tissue. Plant इतने छोटे होते हैं कि इनको vascular tissue की कोई जरूरत पड़ती नहीं है. And because they grow in a habitat which is going to have a moisture, या जहाँ पे ये पानी के पास में ग्रो करते हैं, तो इनको जरूरत भी नहीं पड़ती. They also don't need to have something what you call it as a like tissue which can transport the water. So that's going to be enough for them. So vascular tissue आपको मिलेगा नहीं आपको यहाँ पे. Now let me talk about the main reproductive parts. ये सारे आपके जनरल ट्रेट्स आपके यहाँ पे हो गए. Now you can find some reproductive parts. और अब ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. Assume that this is my graphite. ये मेरा कोई तो भी है graphite यहाँ पे. So this will be having your male reproductive part. यहाँ पे अगर आपका कहीं पे कुछ होगा, इमेजिन करो, ऐसा दिखता नहीं है graphite, but imagine करो you have a graphite and it has a male reproductive part, and that male part is called as the antheridium. And this antheridium is known to have presence of your male gametes, and those male gametes are called as my antherozoids. Antherozoids. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है that a male gamete is going to be called a male reproductive organ is called as antheridium, and antheridium will have the male gametes that antherozoids, और ये आपके होते हैं flagella वाले, so they are always going to be flagellated. तो male gametes जो आपके यहाँ पे होंगे, they are always going to be flagellated. Okay. Similarly, you will have the female gamete as well. Similarly, आपको यहाँ पे आपका मिल जाएगा female gamete, and that female gamete over here is going to be called as your not female gamete, sorry, female reproductive part I will get over here, that is called as my archegonium. So archegonium is going to be the female reproductive organ, and this will be having presence of a egg. कुछ यहाँ पे अलग नहीं मिल रहा, आपको egg मिलेगा आपको यहाँ पे. So you'll get the haploid egg will be seen in them. Square नहीं है, but बता रहा हूँ यहाँ पे. Someone has a query. Sir, अच्छा, okay. Present बता रहे हो आप. Okay, alright. So archegonium will be having the egg over here. अब archegonium को लेके बारे में आपको एक बार बताना चाहूंगा that archegonium जो आपके यहाँ पे होता है ना, it is going to be flask shaped. Archegonium को अगर आप कभी observe करोगे, so archegonium is going to be flask shaped in the bryophytes. ऐसा होता है वो, ठीक है. So that is how the archegonium is going to look like. अब आपको याद रखना है कि इसके अंदर you will have the egg. So within this archegonium we will be having the egg over here. So within the archegonium we will have the presence of the egg will be seen in this. So now you have a bryophyte in front of you. So you have your bryophyte. And this will have the antheridium, and this will have the archegonium. Archegonium will be having the egg, and antheridium will be having the enterozoites. यहाँ पे आपके बनेंगे. And this enterozoites will travel along with the water and will reach to the another bryophyte, और वहाँ पे जाके फिर आपका होगा यहाँ पे fertilization. So let's quickly understand few things over here. कुछ यहाँ पे basic चीजें एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं. Assume that you have a bryophyte in front of you, right? और इस bryophyte के antheridium में से आपने male gamete अपने यहाँ पे रिलीज कर दिया है. Now you have these male gametes which have been released from the antheridium. लेकिन इनको हमने पानी में रिलीज कर दिया और ये happily swim करके जा रहे हैं आपके पानी के अंदर, right? So they will need water for fertilization. And assume that कहीं पे आपका दूर एक और आपके यहाँ पे bryophyte है, या one more bryophyte over here, somewhere growing in along with the water current के साथ साथ ये कहीं पे दूर आपका खड़ा हुआ है. So now what will happen? These enterozoids, ये मेरे यहाँ पे enterozoids, अब ये आपके happily travel करेंगे यहाँ पे पानी के अंदर. They will travel along with the water and they will reach to the oogonia. ठीक है. So यहाँ पे आपका होगा oogonia. Assume that यहाँ पे है you have the oogonia over here. So, sorry, not oogonia, archegonia. You have the archegonium over here. So now what will happen? The male gamete reach into the archegonium. आप imagine करो कि male gametes आपके यहाँ तक पहुंच चुके हैं. अब यहाँ पे आप क्या expect करते हो? Simple सी बात है. You will find that your male gamete is going to fuse with the egg. So आपका जो male gamete आपका यहाँ पे होगा, ये जाके fuse करेगा आपके egg के साथ जो आपका archegonia के अंदर है.
अब जब ये फ्यूजन होगा, सो यू नो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय डिप्लॉइड जाइगोट. अब जैसे मेरा डिप्लॉइड जाइगोट बना, दिस डिप्लॉइड जाइगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस. याद रखना, एल्गे के अंदर आपका यही जाइगोट करता था आपका मियोसिस और बना के देता था आपको यहाँ पे स्पोर्स. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. जैसे ही आपका जाइगोट बना, दिस विल अंडरगो माइटोसिस, दिस विल अंडरगो माइटोसिस. और जब ये आपके यहाँ पे माइटोसिस करेगा, देन यू विल फाइंड अ लॉन्ग इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर विल फॉर्म. तो जब आपका यहाँ पे ये आपका माइटोसिस करेगा, देन व्हाट यू विल फाइंड अ लॉन्ग इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर आपको बनेगा. इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आगे आपको दिखेगा. अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, एंड दैट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे बन के आपको मिलता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट. जो आपको ये आपको बन के जो मिला आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट याद रखना हमेशा, स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. स्पोरोफाइट आपके यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे मिल जाता है. स्पोरोफाइट आपका फोटोसिंथेटिक नहीं होता, ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता. सो आई कैन क्लियरली से दैट स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी. आप जानो नीचे आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी आपका यहाँ पे. सो ये बात आपको याद रखनी है, दैट स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी. ये आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये याद रखना एवरीवन. दैट स्पोरोफाइट इज पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट. This is one thing you have to know, that sporophyte is parasitic on the gynophytic body. Right? Now, quickly let's understand that you have a sporophyte and the sporophyte will have some cells at the top. तो sporophyte के अंदर आपके यहाँ पे कुछ cells होंगे, सारे cells आपके यहाँ पे diploid होंगे. So imagine that all the cells are going to be diploid over here. Simple सी बात है, सारे cells में यहाँ पे diploid होंगे. तो some of the diploid cells will undergo the meiosis. यहाँ पे कुछ diploid cells जो मेरे यहाँ पे होंगे, ये करेंगे आपके यहाँ पे meiosis. और आप जानते हो जब meiosis आपका होता है, उसके बाद आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 4 haploid spores. So when you do the meiosis, you will have a 4 haploid spores are getting formed. So आपके 4 haploid spores आपको बन के यहाँ पे मिल जाएंगे. और ये जो 4 haploid spores आपको बन के यहाँ पे मिले, they can fall somewhere on the ground, and if this haploid spore fall somewhere on the ground, अगर ये कहीं भी जाके गिरते हैं, germinate करते हैं, so they will give rise to a new gametophytic body. That is how the life cycle is going to be. It started with the gametophytic body, it ends on the gametophytic body. तो आपको याद रखना है कि एक गैमेटोफाइटिक बॉडी आपके हमेशा गैमेट्स बनाएगी, और वो गैमेट्स फ्यूज करने के बाद ब्रायोफाइट के अंदर वे बना के देंगे आपको यहाँ पे स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी योर पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट, क्योंकि खुद से खाना बना नहीं सकता. और इसके अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स होंगे, एंड दोस डिप्लॉइड सेल विल अंडरगो द मियोसिस. यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दे विल अंडरगो द मियोसिस and can give rise to spores. So these are my haploid spores. These are all nothing but my haploid spores. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. और इन हैप्लॉइड स्पोर्स की वजह से यू विल फाइंड दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड कैन गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी ओवर हियर. ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना. सो नाउ लेट्स रीड फ्यू थिंग्स ओवर हियर. You will find they are called as amphibians of plant kingdom. We know that they can live on soil but need water for sexual reproduction. They occur in damp, humid, and shaded localities. यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. Body is thallus-like, prostate or erect, attached to a substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack the roots, stem, and leaves. आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे. Root-like, leaf-like, and stem-like structure आपको मिल सकता है. The main body is haploid. It produces the gametes, hence called as my gametophyte. ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. That is your archegonia. Archegonia को देखो, एंटीडियम को इग्नोर करो, बट archegonia को याद रखना, इट्स अ फ्लाश शेप स्ट्रक्चर. दिस इज माय फ्लाश शेप स्ट्रक्चर. यू कैन सी आपको सेंटर में आपका यहाँ पे एग दिख जाएगा. इन द सेंटर यू कैन सी द एग. यहाँ पे आपका एग दिख जाता है. एंड नियर बाय यू कैन सी नंबर ऑफ सेल. यू कैन सी नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल. दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड दे विल बी सीन सराउंडिंग द एग सेल. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फनेरिया. अब फनेरिया में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना, दैट्स अ स्पोरोफाइट. तो याद रखना, स्पोरोफाइट जो फनेरिया के अंदर होता है, या मैं कहूंगा मोसिस के अंदर. सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि जब आप बात करते हो ब्रायोफाइट्स के बारे में, यू टॉक अबाउट द ब्रायोफाइट्स. अब जब आप नीट के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 2 ग्रुप याद रखना है. यू विल हैव योर लिवरवोर्ट्स
liverworts, and you'll have the mosses. So liverworts and mosses are the two groups you have to know. Liverworts जो मेरे यहाँ पे group होता है, this group will be having example of my Markensia and your Rixia. यही तो एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है, और उनमें से जो आपका मार्केंशिया आपको याद रखना है, मार्केंशिया इज अ डायशियस प्लांट. मार्केंशिया जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज माय डायशियस प्लांट. अच्छा, एक कोई चीज बताना, अगर आपको क्लास का पेस ज्यादा फास्ट लग रहा हो तो मुझे इंटरप्ट करके बता देना. अगर लग रहा है कि सर ये कुछ ज्यादा ही तेज जा रहा है क्लास, देन ऑल्सो जस्ट लेट मी नो. राइट, सो मार्केंशिया विल बी अ डायशियस प्लांट. दैट मींस मेल एंड फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग होगा. मेल प्लांट फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग हो जाना है. ठीक है. मॉसिस के अंदर आपको एग्जांपल यहाँ पे आपको याद रखने हैं. मॉसिस कैन हैव एग्जांपल लाइक योर पनेरिया, then you have a polytrichum, and you can have something like a sphagnum. So polytrichum, sphagnum, and funaria are the three examples you will find in the mosses, and liverworts will have a marcation and rixia over here. Now, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यू कैन सी द स्पोरोफाइट इन द फनेरिया, एंड द स्पोरोफाइट जो आपको फनेरिया के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी हैविंग विद द थ्री पार्ट्स. आपको तीन पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. यू विल हैव द कैप्सूल, द अपर पार्ट, जहां पे आपके स्पोर्स बनाए जाते हैं. ये कैप्सूल आपका वो एरिया है जहां पे आपके मियोसिस होगा और आपके हेप्लॉइड स्पोर बनाए जाएंगे. You have a seat है, और somewhere in the bottom जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, you will have the foot. Somewhere in the bottom you will also have the foot. This structure is my sporophyte, is a diploid structure. Okay, चलिए. Then sex organ in the bryophytes are multicellular. Something we have discussed this thing. Male sex organ produce biflagellates anthrozoids. Female sex organ is flask shaped, produce the single egg. That's archegonium. Anthroids are released in the water and meet the archegonium, and anthrozoid fuse with the egg to form the zygote. Something we have discussed. These are my Markensia. So Markensia में आप देख पा रहे हो, you can have a male and female thallus. So you have a female thallus, you have a male thallus, right? So male and female plant आपके अलग होते हैं यहाँ पे. ये याद रखना, archegoniophore and antidiophore. Zygote do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called as my sporophyte. तो zygote आपके यहाँ पे meiosis आपके यहाँ पे करेंगे नहीं. They will form a multicellular body called as my sporophyte. So sporophyte is not a free living but attached to a photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. So sporophyte आपके यहाँ पे free living आपके यहाँ पे नहीं होता, but attached to a photosynthetic gametophyte and derives the nourishment from it. जो मैंने आपको बोला था. Some cells of sporophyte undergo meiosis to produce the haploid spores. These spores germinate and give rise to the gametophyte. Something I've told you this. Right? इनके फायदे क्या होते हैं? Some mosses provide food for my herbaceous mammals, like your birds, और इनके लिए as a fodder की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. आपका स्पैग्नम जो आपके यहाँ पे स्पीशीज है ना, स्पैग्नम जो आपका मॉस का एक स्पीशीज आपके यहाँ पे, इनमें से आपको मिलता है पीट, और इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. तो फ्यूचर में शायद आपको मिल सकता है कि इनको इस्तेमाल करके हम लोग हमारी गाड़ियां चला रहे होंगे. इट्स अ बायोफ्यूल. इसका इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली रन नंबर ऑफ थिंग्स. तो स्पैग्नम इट्स अ मॉस, उसके पीट में से मिलता है यहाँ पे आपका फ्यूल. अब एक और बात यहाँ पे याद रखना, दैट स्पैग्नम इज अ प्लांट which is also used for transportation of other plants. It has a very strong water holding capacity. याद रखना, the sphagnum is known to have a very good water holding capacity, so that packing material for transshipment of living organism हम यहाँ पे कर सकते हैं. आप ये इमेजिन करोगे, अगर आपके पास एक प्लांट है जिसका बहुत अच्छी है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो आप क्या करोगे? अगर आपको समझो आपको जर्मनी से कोई प्लांट मंगवाना है, तो जब जर्मनी से अगर आप प्लांट मंगवा रहे हो, चांसेस है कि वो ड्राई हो जाएगा आते हुए, आपके अमृतसर आते हुए ड्राई हो जाएगा. तो आप करोगे क्या? लाइक यू एंश्योर दैट द प्लांट रिमेन्स वायबल, द प्लांट रिमेन्स अलाइव. तो आप क्या करते हो? उस प्लांट को रैप करते हो सराउंडिंग द स्पैग्नम. स्पैग्नम विल हैव अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वो आपको मॉइस्चर वहां पे प्रोवाइड करेगा, एंड देन यू कैन फाइंड द प्लांट विल नॉट डाई पॉसिबली. तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद याद रखना दैट द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. सो यू शुड नो दैट mosses play an important role in succession, plant succession. They will play important role.
अब सक्सेशन जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ सक्सेशन, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो. सक्सेशन सिंपली मीन्स restoration of habitat. सक्सेशन का मतलब आपका यहाँ पे होता है रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. सिंपल लैंग्वेज अगर ऐसे हम बोले तो, फॉर एग्जांपल कि आपका एक बैरन एरिया है, यू हैव अ कंप्लीट बैरन एरिया जहाँ पे कुछ नहीं है, सॉइल भी नहीं है, बैरन एरिया. अब उस बैरन एरिया के अंदर 100 साल के बाद आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको एक फॉरेस्ट मिल जाएगा. तो द सेम बैरन एरिया, इफ यू गो आफ्टर 400 years, 100 years, सो यू विल गेट टू सी वहां पे आपका फॉरेस्ट बना हुआ आपको वहां पे मिल जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका हुआ सक्सेशन. तो एक हैबिटेट जहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे आपके प्लांट्स आते हैं, स्मॉल प्लांट्स आते हैं, लार्ज प्लांट्स आते हैं, एंड देन यू हैव अ फॉरेस्ट ओवर देयर. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय सक्सेशन. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड मॉसेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मॉसेस आपके आएंगे हैबिटेट के अंदर, वहां पे ग्रो करेंगे. दे आर गोइंग टू इंश्योर दैट कि वहां पे अगर कोई सॉइल की लेयर बन रही है तो उसे वो कंजर्व करें. एंड दैट इज हाउ उस हैबिटेट के अंदर स्लोली एंड स्टेडली आपका सॉइल का लेयर आपका बढ़ेगा वहां पे. सो मॉसेस आर आल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग ऑन टू अ सॉइल. तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट ऑफ ऑन द सॉइल, दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. ये आपका सॉइल इरोजन की भी अपना यहाँ पे लोग प्रिवेंट करेंगे. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द मॉसेस, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद देम. और इस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं आपके यहाँ पे प्लांट सक्सेशन के लिए. लेट्स सी द पिक्चर. पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इनिशियली आपका कैसा एरिया था यहाँ पे. ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो आपका रिस्टोर हो गया इसके अंदर. मॉसिस ने आके पूरे एरिया को कवर कर लिया. अब मॉसिस वहां पे जो सॉइल होगा उसको भी पकड़ के रखेंगे. सो दैट इज व्हाई वी से मॉसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. सो दैट इज व्हाट आल्सो वी मेंशन ओवर हियर. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू, हैव टू ग्रुप्स, लिवर्स एंड मॉसिस. लिवर्स में यह हैव मार्केशिया. अब मार्केशिया में आपको एक बात याद रखनी है, दे आर माय डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये. दे आर माय डॉर्सी ventrally flattened. आपको मिलेगा, दैट मींस व्हाट, दे विल लाइक वेरी क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट. ठीक है. सो अगर मैं बनाता हूं ना आपको यहाँ पे एक मार्केशिया, जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट मार्केशिया आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ माय राइजोइड्स. तो राइजोइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. याद रखना, राइजोइड्स जो आपको मिलेंगे ना यहाँ पे, these rhizoids are my unicellular. राइजोइड्स जो आपको हमें मिलेंगे देखने के लिए आपके मार्केशिया के बॉटम में, दे आर माय यूनिसेल्युलर राइजोइड्स. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो हियर इज, तो अगली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे इज गोइंग टू बी कि आपके मार्केशिया के बॉडी के ऊपर यू विल हैव सम स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल डिप्रेशंस आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे उनके बॉडी के ऊपर. एंड दो डिप्रेशन आर कॉल्ड एज माय गेमा कप्स. यू कॉल देम एज अ gamma cups. So small depressions are seen on the dorsal side or on the body of the markensia. That's called as gamma cups. और gamma cups के अंदर you will have the gamma. Gamma cup के अंदर आपको एक छोटा सा आपको bud मिलेगा यहाँ पे, and that bud over here is called as my gamma. This is going to be the gamma over here. अब ये जो गैमा होता है ना, इसकी मदद से आप असेक्सुअली आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो. तो बेसिकली आपको गैमा आपको मिल जाएगा गैमा कप्स के अंदर. ये वहां से निकलेगा, नीचे गिरेगा, इट विल फॉल फ्रॉम दैट गैमा कप में से निकलेगा, वो जमीन पे गिरेगा एंड विल गिव राइज टू अ न्यू मार्केशिया. इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड विल गिव राइज टू न्यू मार्केशिया. दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है. तो ये गिरेगा नीचे यहाँ पे एंड विल गिव राइज टू योर न्यू मार्केशिया. That is what you will be finding over here. So याद रखना, gamma cups
will be there on the body surface and they will have the gamma and this gamma will fall down and give rise to a new Markensia आपका बन जाएगा. That is their way of producing asexually वो लोग अपने आप को यहाँ पे बना सकते हैं. So you can see them और याद रखना they are dioecious. वापस बता रहा हूँ male and female part आपके यहाँ पे अलग होंगे. They are always going to be dioecious in them. So देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. They grow in a moist, shady habitat such as bank of the stream, marshy ground, damp soil, bark of a tree, woods. Plant body is thelloid. Example Markensia. Dorsiventrally flattened, closely oppressed to the substrate. The leafy members have a tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. So ये जो हमने यहाँ पे दो rows बनाए हुए हैं ना, that's what they're talking about. ये आपको यहाँ पे मिल जाता है. अच्छा याद रखना यहाँ पे आपको स्पोरोफाइट मिलेगा, बट स्पोरोफाइट लिवरवोर्ट्स के अंदर इतना अच्छे से नहीं दिखता जैसा आपको दिखता है फनेरिया के अंदर या मॉसिस के अंदर. तो ये बात रखना कि आपको यहाँ पे भी आपको स्पोरोफाइट बनते मिलेगा. इट विल ऑल्सो हैव माई फूड C10 कैप्सूल, बट वो इतना क्लियरली नहीं दिखता जैसा आपको दिखता है आपके फनेरिया के अंदर. ठीक है. So you can see the gamma cups over here. You can see the gamma on the thelloid body. So you can see this thing very clearly. So कैसे reproduce करते हैं लोग यहाँ पे? By fragmentation of the thelli, by formation of a gamma. That's one thing we have discussed. Gamma are green multicellular asexual buds. They develop in the small receptacle called as my gamma cups on the thelli. The gamma are detached from the parent body and germinate to form the new individual. They will germinate to form my new individual. So ये आपको याद रखना है. Right? So that is what you find happening in them. So that is my asexual mode of reproduction. Sexual में आपको यहाँ पे याद रखना है that male and female sex organ are produced on the same or different thelli. So that's something you have to know. Sporophyte is differentiated into my food C10 capsule. Food C10 capsule. After meiosis, spores are formed. Spores are produced within the capsule. These spores germinate and form free-living gametophyte. These spores are going to germinate and will give rise to your free-living gametophyte. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know. तो ये बातें आप यहाँ पे रखेंगे याद. And that is my sexual reproduction in the your particular groups. अब याद रखना है आपको यहाँ पे that you have your particular फनेरिया in front of you. So I think आप देख पा रहे हो that काफी clearly आपको दिख जाता है. अगर आप पंजाब से हो तो पंजाब में आई डोंट नो एक्जैक्टली कहाँ पे आपको मिल सकता है, बट हिमाचल में बहुत इजीली आपको मिल जाता है फनेरिया ग्रो करता हुआ. पंजाब आल्सो देयर विल बी सर्टेन एरियाज वेयर यू कैन फाइंड फनेरिया माइट बी ग्रोइंग, बट इट्स वेरी क्लियरली सीन. सो यू कैन सी द लोअर पार्ट गैमेटोफाइट इज वेरी ऑब्जर्व. लाइक आप क्लियरली देख सकते हो कि नीचे वाले पार्ट के अंदर यू हैव द गैमेटोफाइट. सो इन द लोअर पार्ट यू हैव योर गैमेटोफाइट and the top part is going to be known as sporophyte. You can see the capsule very clearly over as well. अब आपको याद ये रखना है कि आपको जो फनेरिया होता है, आपके जो मॉसिस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मॉसिस जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे आर माय मोनोशियस. Majority of the mosses you will have over here is going to be my monoecious. Now, when I say that will be monoecious over here, that means what? They will have, the plant body will have male and female reproductive part. ध्यान दे दो यहाँ पे पहले अभी. So you will have male and female, both the, so the gametophyte will be having both archegonium and antheridium, both of them. You will have your antheridium and your archegonium. So antheridium and archegonium is something which will be finding in your gametophytic body. So the gametophyte will have both the things, will have antheridium and will also have the archegonium in them. ठीक है. ये दोनों आपको यहाँ पे देखने के आपको मिल जाएगा आपके इन बॉडी के अंदर. एंड अगर आपको ये दोनों मिल जाए ना किसी गैमेटोफाइट के अंदर, देन यू विल क्लियरली से दैट्स माय मोनोशियस. आपके मार्केंशिया में ऐसा नहीं हो रहा था. मार्केंशिया में द गैमेटोफाइट वाज ईदर हैविंग द आर्चिगोनिया और वाज हैविंग द एंथीडियम. तो दैट इज व्हाई वो आपका मोनोशियस नहीं था, आपका डायशियस था. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. राइट. द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज माय गैमेटोफाइटिक. इट कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेजेस ओवर हियर. एक आपका यहाँ पे होता है प्रोटोनेमा स्टेज एंड वन विल माय लीफी स्टेज. Now let's do one thing. ये वाले स्टेज हम बाद में देख लेंगे. We'll have a look at this stage later on. ठीक है.
तो कल हम लोग जब वापस मिलेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द क्वेश्चन सॉल्विंग, लाइक हम इन स्टेज को खत्म करेंगे एंड देन विल डू अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग हम वहां पे कर लेंगे। एक बार आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग आपका वहां पे हो जाता है, 10 जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द टेरिडोफाइटा, राइट। बट मैं चाहूंगा कि आप इतनी चीजें आप यहाँ पे पढ़कर, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड नाउ, and read all those things which you have done here, and in the next class we can do the question solving first after completing the portion, and then we can do the टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप एक बार देख लेना इनसाइड से। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार फिर बैठ के, सो दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स एंड रिमेंबर द एग्जांपल्स इन देम। जितने भी एग्जांपल आपके यहाँ पे देखे रखे, यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स, राइट। सो या दैट्स व्हाट वी हैव डन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ओवर हियर, अगर आपके यहाँ पे कोई सवाल है, then please go ahead and ask your questions. If you have any questions or query in this, then please feel free to ask your questions. And if in case if you have no questions, which you don't have right now, then yes, we can wrap this up. Okay. So that is something we have done. Next time we'll be solving some questions. आज हमारे ग्राफाइट के ज़्यादा क्वेश्चन हमने कुछ किया ही नहीं है. So next time हम क्वेश्चन सॉल्व करें ग्राफाइट्स के, so that you can have a grip on the topic while solving the question. Alright people, चलो, we'll catch you again tomorrow at the same time. चलो, thank you so much.